All right, so let's get back here. So we have this complex pipeline, and what we want to do here is we want to get the output, or we want to know what is the output of this one hot encoder. Right, so all the code is present here. We are creating a pipeline. Now this pipeline has two steps in it. Step number one is preprocessor. Step number two is a logistic regression. This preprocessor in itself has some other steps involved, such as categorical preprocess and numerical preprocess. Okay. So now we want to find out what is the categorical preprocessor output for gender. That's why we first fit the data into that pipeline, and after that we access the column transformer. Zero means column transformer which is present here. So this is zero, this is one. So one will give you logistic regression. This one gives you logistic regression. It gives you logistic regression, but we want zero. Okay, zero may you get a categorical. In this zero, we want this particular one. So this is zero, zero. No, it doesn't work like that. Uh, doesn't work like that. There's some other way of doing it. Maybe it's categorical like this. Mm. Column transformer object is not subscriptable. Okay. Column transformer. Let's just go and check the column transformers. scikit-learn उसका डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं. Okay, column transformer transform. Mm, so this is a column transformer. It has norm1, it has norm2. These are the two variables. Okay, access this, fit transform. Okay, feature hasher, input type string, get feature names, get output features of the. Okay, get feature names. This will be one. Alright. इसमें क्या चाहिए हमें? इसमें कैटेगरिकल चाहिए हमें. Okay, this not equal. Input feature is not equal to feature names in. Okay. um, let's just go back to the documentation again. Documentation कहाँ है उसका? Not this one. This is the documentation. Okay. Get the features output. Example दिया होगा इसका. Array like of string default is none. Okay. If I just don't give anything, it will give me output of everything. That means let's just check how it works. So this is where I'm getting the error. Okay. Let's just not. Okay. This is the feature names. So these are the columns that you're getting created. Okay, underscore underscore gender female, gender male, numerical के लिए height, numerical weight. So these are the columns that are getting created uh, out of this column transformer. Okay. And I should make it a display box. Okay. तो ये पाइप जीरो जो है वो आपका कॉलम ट्रांसफॉर्मर है. उस ट्रांसफॉर्मर के बाद में यहाँ पर कौन से कॉलम्स क्रिएट हो रहे हैं, वो कॉलम्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं. ओके, दिस इज हाउ यू गेट द कॉलम्स. नाउ यू वांट टू गेट द डेटा, करेक्ट? ओके, सो वांट टू गेट द डेटा.
फिट से डेटा मिलेगा पैरम से सेट आउटपुट। Okay, 1 second. So you get the output here. So get the input features. So display the names. Mm, Fitted transformer names. Okay, name transformers. Is how you get it. So type 0 name transformers. Imputation means simple imputer. Uh, Category. Okay, category. Not encoder. Okay, dot. Okay. What I did is ये pipe 0 is your column transformer. डॉट नेम्ड ट्रांसफॉर्मर्स इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर है कैटेगरिकल वैल्यूज प्रेजेंट, राइट, उसके अंदर कैटेगरिकल है, न्यूमेरिकल है, तो मैंने कैटेगरिकल सेलेक्ट किया। सो दिस इज लाइक अ डिक्शनरी। ओके, सो दिस इज लाइक अ डिक्शनरी। इस डिक्शनरी में से मैंने इस की को एक्सेस किया। दैट इज हाउ यू एक्सेस द कीज इन द डिक्शनरी, राइट। और उसका फर्स्ट एलिमेंट इज दिस वन हॉट एनकोडर, सो आई गॉट द वन हॉट एनकोडर हियर। नाउ आई वांट टू गेट द output of this encoder, right? I think I can just do uh, let me just check here. Hmm. एक्चुअल डेटा नहीं स्टोर करते हैं वो लोग, इसलिए सो दैट यू कैन स्पीड इट अप। डेटा, इंटरमीडिएट डेटा स्टेट, दिस इज व्हाट यू वांट टू डू। ओके, name step transform plus data, as far as I understand you can get transform data you're going to fit, use but in my case pipeline is huge, intermediate steps. Mm, yeah, I think there is no straightforward way. So what this person has done here is he added a debug step here. So after tf idf he said debug, and here in df he's adding two different methods. One is transform and second one is fit. All he's doing, he's just printing the output here from the debug and saving it into something called as shape. Okay, so I think intermediate output नहीं मिलता है यहाँ पे. So you have to do the one hot encoding outside, and once you know that it works, after that you have to put it in the pipeline. Or you can use the second method where you put a debug uh, here. So I can just show you how it is done. So what is done here is a new class is created called as debug. It is a subclass of base estimator and transformer mixin, which is going to have two main methods, transform and fit. And because this is a transformer, we can add it to a pipeline like this. So now it is getting added to a pipeline. Now when you do this particular out input, you can put a debug step after that and say whatever is the values present, you can save it.
I can show an example to you. Maybe that will help you understand. Copy this part here. So what is being done is a new transformer is getting created here. So let's create a new transformer. So this is a new transformer which is called as a debug transformer. Let's run this. Base estimator is not defined. I need to import that. Give me a second. Okay, just import these two. Okay, where is that code? All right, so this is a new debug class that I created, which is using these two. So now let's put a debugger here. Where you want to put a debugger? You want an output of your one hot encoder, right? So you put a debugger here. Just put a debug here. Debug, then say debug. Okay? That's all you have to do. A mistake here. So this is debug. Okay. So ये आपका debug का method है, object है, which is a transformer यहाँ पे, right? This is going to store it. All right. Now let's try to run this. ये हो गया. Okay. We fit the data. There's a problem. The problem is in, let's read here. Problem कहाँ पे है? Debug में है. Shape. Name shape is not defined. Okay. Self dot shape. Name shape is not defined. Okay. इसने print किया गया x dot shape को. Okay. Shape को print किया. This is x dot shape. So that is x dot shape, but I want to store the data as well. So all I have to do is self dot, let's say, I stored a print here. Let's not save anything here. Let's just print, we just print top 5 rows. Okay, x dot head. Okay, तो मैं shape print करता हूँ और head को print करता हूँ. Maybe how many rows I have, how many columns I have, and then what are the top 10 rows. So I'll put 10 here. That's all I have to do here. I can save, but I'm not going to save anything. I'm just going to print it for now. तो ये मैंने इसको यहाँ पे डाला debug को. One hot के बाद में debug डाला मैंने. Then I fit it. करने के बाद में यहाँ पर it's not working. Why is it not working? It is no attribute X. Okay, so that's a matrix. That's why. CSR matrix. What's a CSR matrix? So it's sparse matrix, I think. Yeah. So it's a sparse matrix. Sparse matrix को subset करना है हमें. CSR array 3 4 data. Okay, how do you subset a CSR? Copy, min-max, set shape, duplicates. Okay. Yes, yeah. I know this is, looks complex, but you have, this is how you have to code. So you are going to need that here. Okay, that's your CSR array, a sparse array, int sparse array. Uh, 3 4. Okay, data row call is going to create it, but I want to subset it, right? Okay, let me just put a CSR array and I think it will work. I don't need all of this. I don't need any of this. It's going to print it. Be a big array, but it's fine. जैसे ही मैंने fit किया, at that time it should start printing. So
दिस इज टेलिंग मी 0 और 1th लोकेशन पे वैल्यू 1 है, 1 and 1 लोकेशन पे वैल्यू 1 है. So on this does not look like a row and column. So you want to convert this into a data frame, right? So let's just convert this to a data frame. These are data frame. Mm, A dot dense, two dense will give it. Okay. So I just go back here and I go to the here import pandas. I need pandas as PD. This is PD dot data frame. Right? If A is a CSV connect to array. Okay, this will work. And here's you can use two arrays. There's a two dense that produces numpy matrix, which is also a data frame constructor. Okay, I think this is what we need. It was two dense. Yeah. For two dense, and this say hopefully work now. Okay. We are having two columns here. So one column is 0, second column is 1. ये क्या है? Gender है, right? So gender 0 और 1. क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो ही values हैं. You are having either male or female. That's why you are getting two values created. Now the problem here is you don't want to, you want to drop the duplicates. So this is one hot encoding, right? Where you don't want to create the, मतलब जब आप one hot encoding करते हो, अगर आपके पास three different values हैं, you should get two columns. Correct? Yes or no, Aditya? सर। Yes. So that's what we want to do here. So let's fix that problem. Here, what you can say is drop, right? So one hot encoder के code में जाकर है और उसके documentation check करना है. One hot encoder का documentation drop none. कैटेगरीज ऑटो ड्रॉप के बारे में क्या लिखा है? ठीक है, ड्रॉप फर्स्ट. So you want to drop the first value. You do, so drop is equal to first. इसका मतलब एक ही कॉलम क्रिएट होगा which will be either 0 or 1. Let's do that. इसको फिट करता हूँ मैं. क्या मैंने और यहाँ पर मैंने इसको this is what I have now. See, only one variable got created, which is this. Okay, ओके सर। make sense? तो सर हम Mm-hmm. ये जो मिसिंग वैल्यू है डुप्लीकेट से, ये पहले स्प्लिट करने से पहले ड्रॉप करते, इस यहाँ पे भी कर सकते हैं पाइपलाइन में, वहाँ अगर नहीं करे तो। करेक्ट करेक्ट, वहां पर भी कर सकते हो. अभी मैंने क्या किया, सिर्फ एक नया स्टेप ऐड किया यहाँ पे, डीबग. तो डीबग ठीक है। स्टेप आप यहाँ भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो. मैं यहाँ पे सिंपल इंप्यूटर के बाद में भी एक डीबग डाल देता हूँ, ठीक है? सो दैट यू नो प्रिंटिंग कैसे हो रहा है उसका, राइट? मैं यहाँ पर भी ऐड कर देता हूँ, उसके पहले और बाद में ऐड कर देता हूँ. मैं यहाँ पर भी ऐड कर सकता हूँ, इस पाइपलाइन में भी. ठीक है, आई कैन ऐड इट एनी वेयर आई वॉन्ट. दैट इज वॉट दिस डीबग इज गोइंग टू डू. सेम नेम है, तो आई नीड टू रीनेम दिस. दिस इज डीबग 1, this is debug underscore 2 maybe. ठीक है, नाम अलग अलग देने होते हैं. Guess is not callable perhaps. यहाँ पे कॉमा रह गया. ओके, यहाँ पर एक debug है, यहाँ पर एक debug है. लेट मी ट्राई दिस. सेम नेम से क्या होता है? वर्क्स. ठीक है, नो नीड टू हैव डिफरेंट वैल्यूज. व्हाट 1D array. ओके, अंडरस्टूड. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो डिबगर है वो x डॉट डेंस नहीं काम कर रहा है, क्योंकि x जो है समटाइम्स इट्स अ sparse variable, sometimes it's a different variable. So instead of just keeping that complexities, I'll just remove everything. I'll just keep it x as it is.
ठीक है, जो भी आउटपुट रहेगा उसको प्रिंट करो, इतना ही बोलता हूँ मैं डिबगर को। आई नॉट ऐड एनी अदर कॉम्प्लेक्सिटीज, ठीक है। तो लेट्स जस्ट कीप इट सिंपल। शेप प्रिंट करो और आउटपुट प्रिंट करो, उतना ही करना है इसको। सो दिस इज द इंप्यूटर। प्रिंट काम क्यों नहीं कर रहा है? ओके, ये नेम्स यूनिक चाहिए, एज एक्सपेक्टेड। ओके, सो दिस हैज टू बी यूनिक, सो दिस इज 1, दिस इज debug 2। यूनिक नेम्स चाहिए होता है उसको। सो इट इज लुकिंग ना। सबसे पहले इंप्यूटर जो था, उसका आउटपुट ये है आपका, मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल, सो दैट इज द इंप्यूटर आउटपुट। ओके, उसके बाद में जो दूसरा डिबगर है, उसका आउटपुट रहेगा ये 0101 वैल्यूज। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ योर सेकंड डिबगर। ओके, सो ऐसे आपको डिबग करना पड़ेगा, सबको एक 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 डिबग करना पड़ेगा। बट आई थिंक क्लीनर वे शुड बी कि आप पहले पाइपलाइन के बाहर करके देखो सबको, उसके बाद में पाइपलाइन में चीजें ऐड करना शुरू करो। ओके, सो डू अ वो सिंपल तो अगर इंप्यूटर सर नहीं भी फर्स्ट। देखे तो चलेगा, वो पाइपलाइन में क्रिएट करेंगे तो परफॉर्म तो करेगा ही सही। परफॉर्म तो करेगा ही, दैट्स स्टिल अ क्वेश्चन मार्क, राइट। सो परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो कैसे पता चलेगा आपको? ओके, सो सर पहले चेक करेंगे उसके बाद पाइपलाइन क्रिएट करेंगे। राइट राइट, यू कैन डू द पाइपलाइन राइट नाउ, इट्स फाइन। अगर आपको जल्दी प्रोजेक्ट खत्म करना होगा तो पाइपलाइन डायरेक्टली यूज करो, यू कैन अज्यूम दैट इट इज गोइंग टू वर्क। बट आइडियली आप लोग सिंपल इंप्यूटर पहले चेक करके देखोगे कि काम कर रहा है कि, उसके बाद में उसका आउटपुट यू विल ट्राई टू सी इफ इट इज वर्किंग फॉर द स्टैंडर्ड स्केलर और नॉट। ओके, पर सर अगर मिसिंग वैल्यू पहले ही हमने वो कर दी, ड्रॉप कर दी या फिल कर दी, तो यहाँ पे इम्प्यूटेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है ना? नहीं है जरूरत यहाँ पे, यू डोंट नीड दिस, यू जस्ट नीड द स्टैंडर्ड स्केलर हियर। ओके, या ये सर केवल शेयर कर देना नोटबुक से। या आई शेयर। ओके, ओके सर, थैंक यू। यस। Any other questions before I stop the recording? I'm going to share this recording later. नो सर। Okay.